Okay, sorry. Good evening, everyone. Myself, Nishat Biranjan, a final year, final semester MBBS student from AIIMS Nagpur. And आज हम session लेंगे the Ask Me Anything session, particularly regarding the chemistry subject. All right. So in this session, what we do is basically the Sathi platform. It is a very good initiative in which we can take any question regarding to any domain of that particular subject. जैसे कि आज हम जो ले रहे हैं केमिस्ट्री का सेशन ले रहे हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री आपके 11th एंड 12th क्लास के जो भी डाउट होते हैं रिगार्डिंग any of the questions, any of the subjects, any of the subtopics, so that you can ask me. Apart from this, there is also the provision of asking questions live during the session. मतलब जब ये session चल रहा है इसके बीच में भी आपके अगर कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, दैट टू यू कैन आस्क मी. एंड ऑल यू नीड टू डू इज through the comment section in the YouTube and the website, you can interact with me, and I'll be very happy to answer your doubts and clear them. All right. चलिए. So starting with the first question. पहला क्वेश्चन हमारा जो हमें इस बार मिला था, सो दैट सेज कि ozonolysis. Okay, so the first question itself is regarding ozonolysis. There are some questions which may have been repeated, so I'll tell you ki what part is repeated and how is it similar to the other query that was asked, right? ठीक है. So the first question is ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the products. This confirms the presence of. ठीक है. तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ओजोनोलिसिस हुआ है ना. ओजोनोलिसिस, लाइसिस, द वर्ड लाइसिस व्हिच हैज बीन written here, license means breakdown, right? Okay, so एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है से एक्स, एंड उसका ओजोनोलिसिस करके हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ. नाउ फॉर दिस वी नीड टू नो कि ओजोनोलिसिस रिएक्शंस जो होती हैं, so what are those reactions primarily? So if you recall from your organic chemistry chapters, so ozonolysis एक ऐसी reaction है जहाँ पे ozone will react with alkenes to form ozonides. ठीक है. So particular ozone reacts with an alkene. Now alkene means double bond. Okay. And what we get is ozonides. Now ये जो ozonides हैं ये हमारे cleave किए जाएंगे. They will be broken down by a reducing agent to yield carbonyl compounds. So the whole reaction, if we see in one aspect, is कि आपका एक एल्कीन कंपाउंड था, उसने ओजोन के साथ रिएक्शन किया, इसने बनाया ओजोनाइड. अब ये ओजोनाइड पे एक्ट किया किसने? एक रिड्यूसिंग एजेंट. एंड हमें क्या मिला? कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया. नाउ लिसन टू मी. इफ formaldehyde, now formaldehyde means HCHO. If formaldehyde is one of the products, what will that indicate? This will indicate the presence of a terminal alkene. मतलब वो alkene जिसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, that is at the end of the carbon chain, right? जैसे कि आपका इथीन हो गया या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड एट टर्मिनल पोजीशन, तभी हमें actually formaldehyde मिलेगा. So if we have to write the reaction, what we can do is there was an alkene, it reacted with a ozone molecule. तो alkene ने react किया ozone molecule के साथ, इससे हमें क्या मिला? आपका ओजोनाइड. ये ओजोनाइड पे आपका किसने एक्ट किया? रिड्यूसिंग एजेंट ने. एंड ये जो रिएक्शन थी इससे हमें क्या मिला? एक कार्बोनिल कंपाउंड. अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये यहाँ पे HCHO है, तो जरूर ये जो एल्कीन होगा इसमें टर्मिनल होगा, टर्मिनल डबल बॉन्ड होगा, तभी तो एक कार्बन इसमें से निकलेगा टूट के. ओके, राइट. So this was regarding the first reaction, that first doubt, that is regarding ozonolysis, कि हमें जहां पे भी आपका डबल बॉन्ड होगा ना उधर से टूटेगी वो रिएक्शन, और वो जब टूटेगी रिएक्शन तो उधर से आपको उतने कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल मिल जाए.
Okay, done. चलिए. Now moving on to the next question. Let's change the color scheme yellow. Right. Okay. So next question हमारे पास है. At ordinary temperature and pressure and high temperature, hydrogen is present in which form? So look, in this doubt, first the flaw which I found was कि first you have written ordinary temperature and pressure, and second you have written high temperature. So if you could have spaced it, it would have been very easier for me. तो मुझे बाद में जाके समझा कि you are talking about कि एक कंडीशन, ये दो कंडीशंस हैं, मैंने पार्टीशन कर दिया है. एक कंडीशन में आपने मुझसे पूछा है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करिए, मतलब नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. And second condition that you have asked is one of high temperature, right? So इन दोनों ही conditions में हाइड्रोजन आपको कौन सी फॉर्म में predominantly present रहता है? Alright, चलिए. So let's talk about first the ordinary temperature and pressure. तो ordinary temperature and pressure पे हाइड्रोजन we all know जो हमारे surrounding atmosphere है, जो हमारी air, so hydrogen will exist as a diatomic molecule, that is H2. Now, if we talk about the high temperatures, now high temperatures से मेरा क्या मतलब है? Particularly above 2000 Kelvin. High temperature means above that of 2000 Kelvin. इस temperature पे and इसके above the hydrogen molecules जो हमारे होंगे H2, they will dissociate into atomic hydrogen. ये जो hydrogen hydrogen bond था H2 का, ये आपका टूट जाएगा. ठीक है. अब ये बॉन्ड टूटने से आपकी जो स्टेबिलिटी है एटॉमिक हाइड्रोजन की, वो बहुत अनस्टेबल हो जाती है, काफी घट जाती है, स्टेबिलिटी होती है, राइट. अगर हम एक और एक कंडीशन, एक बोनस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि हम प्लाज्मा की बात करें या फिर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, ठीक है. एक्सट्रीमली हाई मींस वे वे अबव 2000 केल्विन. सो इन प्लाज्मा और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स हाइड्रोजन आपका आयोनाइज भी हो सकता है टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो हमने तीन देखे. एक था आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पे हाइड्रोजन आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अरेंज था. सेकेंड वाज योर हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर इट वाज above 2000 Kelvin. And last, if we talk about plasma or extremely high temperatures, उस स्टेट में it will ionize and will form protons as well as electrons. ठीक है. So this was talk about hydrogen. चलिए. Moving on to the third doubt. The third doubt is basically related to one of the very common doubts which I have been receiving over the past, I guess, 4 or 5 sessions, and the निशत doubt आपकी is regarding Gibbs free energy and Gibbs निशत equilibrium निशत निशत constant. निशत निशत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. So the doubt says what constant, right? So Gibbs free energy delta G, and जो हाँ सर, अभी क्लियर है वॉइस? हाँ, यस यस. Okay. Okay, so we'll start the third question again. So the question says, what is the relation between Gibbs free energy
and equilibrium constant, right? So Gibbs free energy is denoted by delta G, ठीक है? And जो equilibrium constant है उसको हम डिनोट करेंगे by K. Now the basic जो आपकी रिएक्शन है वो है डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के. नाउ हियर जो लॉगरिथमिक स्केल है हमारी, ये लॉगरिथमिक स्केल इज इन द नेचुरल लॉग सिस्टम, दैट इज एल एन. नाउ इफ यू कन्वर्ट इट इनटू योर लॉग ऑफ 10, जो बेस वैल्यू हम 10 लेते हैं, जिसकी वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में दी जाती है, या फिर हमारे पास जो टेबल्स होते हैं लॉगरिथमिक स्केल्स के, वो होते हैं बेस ऑफ 10 में, ठीक है? तो इसमें हम जब डालते हैं log ऑफ 10 में, सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के. हमारी इक्वेशन जो है इट कन्वर्ट्स टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट? एंड लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल्स जो हमारे पास इधर प्रेजेंट है. फर्स्ट, डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, R is your universal gas constant. T is the temperature in Kelvin. And जो K है हमारा, वो K है, as we discussed, it was equilibrium constant. Now, specifically, so this was the relation between delta G and K. Now, going one step ahead, equilibrium पे delta G की जो value है, वो हो जाती है 0. And the equation will become delta G naught, because at equilibrium we are talking about the stable conditions. So उधर हम denote करते हैं by naught. So delta G naught is equals to minus RT ln K, right? Okay. And delta G naught is the standard Gibbs free energy change. So this is the particular relation between Gibbs free energy and the standard Gibbs free energy change in the condition of equilibrium. And K था हमारा equilibrium constant, right? Okay. Moving on to the next question. So the next question says, why effect on vapor pressure of solvent when non-volatile solute is added? I think you wanted to mean what is the effect on vapor pressure of solvent when non-volatile solute is added. So let's talk about it. Now, कोई भी आपके solvent में अगर आप non-volatile solute को add करते हैं, तब जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है. ओके, नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ. नाउ दिस राउल्ट्स लॉ states that vapor pressure of a solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. मतलब कोई भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, वो इसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि वो किसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? इट विल बी अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. नाउ अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन में या फिर उस सॉल्वेंट में, उससे क्या हो रहा है? इट विल रिड्यूस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्यूट का बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट का और कम हो जाएगा. नाउ दिस लीड्स टू लोअरिंग द वेपर प्रेशर. ओके, एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम अभी बचे हैं टू एस्केप इनटू द वेपर फेज. सो कम सॉल्वेंट होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा, राइट? So this is the basic analogy regarding it. So hope it is clear. ठीक है, तो ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड रिलेशन विद द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says, when the initial concentration of the reactant is doubled, what will be the half life period of a zero order reaction? ठीक है, इधर बेसिकली आपके दो पैरामीटर्स हैं. जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज वन पैरामीटर, एंड सेकंड इज द हाफ लाइफ. एंड ये जो दोनों ही हम बात कर रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ रिमेंबर दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये बेसिकली
जो जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनमें रूल्स होते हैं, एंड वी कैन ऑल डिराइव दिस इफ यू वांट। ये सब डिराइव हो जाते हैं, बट एज अ बेसिक थंब रूल यू हैव टू रिमेंबर इन एग्जाम्स कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ द half life of a zero order reaction is given by T half is equals to A naught upon 2K। ये रहा फॉर्मूला हाफ लाइफ का। इधर जो A naught है, A naught is the initial concentration and K is the rate constant। Now when you will double the initial concentration, तो हम ये देख सकते हैं कि initial concentration is directly proportional to the T half। अगर आपने initial concentration को डबल किया एंड K हमारा रेट है, तो हाफ लाइफ भी हमारी डबल हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in the next question we have to find out कि how will we be finding out the nodes for 3s and 3p of a hydrogen atom, and how will we draw the graph for 3s as well as 3p, right? So first of all we have to understand कि what is the meaning of nodes in an atomic orbital। So जो nodes होते हैं in an atomic orbital, they are the regions जहाँ पे probability of finding an electron is zero। One are nodes and the other are antinodes। So nodes हमारे वो regions हैं जहाँ पे probability of finding an electron is zero। Now hydrogen-like orbitals, we are talking about hydrogen-like species like He plus, Li plus 2, those kind of orbital। The number of radial nodes in an orbital is given by n minus L minus 1। These are the number of radial nodes, and n हमारा क्या है इधर, principal quantum number, and L is the azimuthal quantum number, right? So if we talk about 3s में हमारा n जो रहेगा principal quantum number वो क्या रहेगा 3, L रहेगा हमारा 0, s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए L रहेगा 0, तो 3 minus 0 minus 1 is equals to 2 radial nodes। Similarly for 3p। ना 3p के लिए अगर हम देखें, 3p के लिए n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो रहेगा 3 एंड l रहेगा 1। सो 3 minus 1 is equals to 1 radial node। क्लियर? तो ये रहा हमारा कि हमें 3s एंड 3p जो हाइड्रोजन एटम है उनमें नोड्स कैसे निकालने हैं। अब हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ पार्ट। सो 3s ऑर्बिटल में जो ग्राफ है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उसमें हमारे दो नोड्स मिलेंगे जहां पे कर्व जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट 3p, द ग्राफ विल शो ओनली वन नोड विथ वन पीक इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एंड एक दूसरी पीक भी मिलेगी जो कि थोड़ा सा दूर रहेगी उससे। तो एस एंड पी में बेसिकली आपको डिफरेंस कहाँ मिला कि जो इंटरसेक्शन था विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टू नोड्स दैट वाज देयर इन एस ऑर्बिटल, whereas in p orbital आपको क्या मिला, एक one node with one peak in probability density which was closer to the nucleus and a smaller peak which was further away, right? Okay, चलिए this was regarding the 3s and 3p orbitals। The 3s orbitals as a matter of fact are spherical and the 3p orbitals are like this। Okay, चलिए now the next question। Hot concentrated sulfuric acid is an oxidizing or a reducing agent। So what we basically want to know is कि ये जो species है हमारी H2SO4 की oxidizing की तरह काम करती है या फिर reducing, या फिर as a matter of fact it can act as both, right? So basically जो hot H2SO4 है it will act as a strong oxidizing agent in many of the reactions। आपकी जो books में है, जो हमें questions रहते हैं, उनमें भी हमें
काफी रिएक्शंस में ऐसा लिखा जाता है कि सो एंड सो कंपाउंड्स विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4. सो वी हैव टू रिमेंबर कि वो हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन. ओके, सो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट विल ऑक्सीडाइज द सब्सटेंसेस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ and getting reduced. This is the basic principle of a redox reaction. एक जो हमारी स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो जाती है, टिपिकली प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, एलिमेंटल सल्फर, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, एलिमेंटल सल्फर मीन्स S, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S. ना कौन सी इसमें से स्पीशीज हमारी प्रोड्यूस होगी एक रिएक्शन में, that depends on the reaction conditions. Okay, so this was regarding hot concentrated sulfuric acid. Now let's move on to the eighth doubt. In the eighth question, we were asked about the Friedel-Crafts acylation mechanism. It is not acetylation, it is acylation mechanism. And basically I think you wanted to know from me what is the mechanism, not about the reaction as such, but the full mechanism, sequential stepwise coordination. So a little bit introduction into the acylation reaction. The Friedel-Crafts acylation reaction is a method to introduce an acyl group into an aromatic ring using an acid chloride and a Lewis acid catalyst. So थोड़ा break करते हैं हम इसको. We'll break down the definition. हमें क्या करना है, एक acyl group को aromatic ring में introduce करना है. Introduce an acyl group into an aromatic ring. Now इसके लिए हमें aromatic rings as you know are stable species. इसके लिए हमें दो चीजों की हेल्प लेनी होगी. What are those two things? First is an acid chloride, that is RCOCl, and second is a Lewis acid catalyst. ये जो Lewis acid catalyst है, it can be something like aluminum chloride, which is AlCl3, right? So these are the two main help that we need for this particular reaction. अब ये जो mechanism है, what does this mechanism involve? The first step in this reaction will be formation of the acylium ion. ठीक है, directly हम introduce नहीं कर सकते, we have to go step by step. So acylium ion, what happens in this step? जो हमारा Lewis acid है AlCl3, it will coordinate with the acid chloride. Okay, after this coordination, this will lead to the release of chloride ion and formation of an acylium ion. तो क्लोराइड आयन हमारा रिलीज हुआ एंड एक एसाइलियम आयन बना. अब ये जो एसाइलियम आयन है, ये कैसा इसका केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा? सो एसाइलियम आयन इज बेसिकली RCO प्लस. R means it can be any elemental chain of the organic compound, and CO plus. Second will be the electrophilic attack. अभी जैसे ही हमारा एसाइलियम आयन बन चुका है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल. The acylium ion will act as an electrophile and attacks the electron-rich aromatic ring. In aromatic ring, as you know, resonance के वजह से जो electrons हैं double bond के, वो it moves around the ring, making it stable. So ये जो acylium ion है, which now is acting as an electrophile, it will attack the electron-rich aromatic ring and it will be forming a carbocation intermediate, right? चलिए, सो इस स्टेप में दो चीजें हुई. एक तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया एंड सेकेंडली एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाया. थर्ड स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन द थर्ड स्टेप, एज यू कैन सी, देयर विल बी रीअरेंजमेंट एंड डीप्रोटोनेशन. तो ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन, एंड द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन रिस्टोर्स द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग. So, जैसे ही प्रोटॉन लूज हुआ, जो हमारे रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई थी बिकॉज ऑफ द
acylium ion attack, that is lost. Okay. Now, the last step which is there in this Friedel-Crafts acylation reaction will be regeneration of the catalyst. Now, ये जो catalyst है, this catalyst is regenerated by the reaction of the chloride ion, that is Cl minus, with AlCl3, and what we'll be getting is the incorporation. जो हमारा एसाइल हम शुरू किए थे, वो एसाइल आयन आपका इस कंपाउंड में इंक्लूड हो गया होगा, right? So this was the whole sequential steps regarding the Friedel-Crafts acylation mechanism. I hope this is clear. If not, I'll again explain this with the help of an I'll take some compound and I can explain it to you again, right? चलिए, now moving on to uh, कि ये जो हमारा चैप्टर है कार्बन हेड्स कंपाउंड्स. So over the spectrum of class 11 as well as 12, what are the important topics? You asked me regarding the important topics for the same, right? Okay. So first of all, we'll start with hybridization in carbon. So जो hybridization वाला chapter है, in which the organic compounds present with sp3, sp2 and sp hybridization, that will be included. Okay. Then second is the isomerism in organic compounds. So regarding isomerism, we have two types of isomerism. One is the structural isomerism, and second will be the stereoisomerism. Okay. One is structural as well as stereo. So these two kinds of isomerism are the ones which I want you to be aware of. Third, talking about the functional groups and homologous series. जितने भी functional groups है, their order of stability as well as order of importance, जो इसका order of importance रहेगा functional group का, उसी के हिसाब से मैं उनको नेम कर पाएंगे कि एक आपके पास कीटोन ग्रुप है, एक आपके पास अल्कोहल ग्रुप है. तो what to name that compound? Is it a keto compound, oxo compound, or is it an all compound? Dash OL. This was regarding the functional groups. Talking about homologous series. Homologous series means methyl. Yes. So we'll start this question again. Uh, there was the breakage in voice. So we talked about the important topics for carbon and its compounds. First was the hybridization in carbon. Okay. Now, hybridization in carbon में we had the sp3 orbitals, sp2 and sp orbitals, right? Regarding structural as well as stereoisomerism. So, structural isomerism means there can be the change of carbon position, there can be change of group, as well as there can be the change of any side chain that is attached. Then there is the functional group as well as homologous series. Then in functional group हमने क्या देखा था? It was
कि जो ऑर्डर ऑफ उनकी इम्पोर्टेंस है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, किस तरह से उनके ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस से विल बी यूजिंग दैट टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Then the next point obviously is the nomenclature. Nomenclature of the organic compounds, right? Okay. And nomenclature mein one more thing that I want you to especially be wary of is that for the functional group, that is keto compound or it is an oxo compound, उसको कैसे पहचानना है, that we have to be very careful. Okay. Coming on to the next important topics, we have the basic reactions of hydrocarbons. अब ये जो बेसिक रिएक्शंस मैं कह रहा हूँ, इट साउंड्स, आई एम टर्मिंग देम बेसिक बिकॉज दीज आर द एडिशन रिएक्शन, substitution reaction as well as elimination reaction. But the important thing in these particular reactions is there are some named reactions also, right? So those named reactions you have to be very careful about कि आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि so and so particular reaction, just what happens in that, what is the byproduct, what is the catalyst in such and such reaction. So you know that कि ये जो reaction है, ये addition reaction है, elimination है, ये substitution है, but through that you have to infer कि what are they actually asking you in the question, right? So after reactions then comes the aromatic compounds. अभी तक हमने जो बात करी थी that was basically regarding the straight chain compounds. जो हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं में फंक्शनल ग्रुप्स, उन्हीं के अंदर होमोलॉगस सीरीज, उन्हीं के अंदर आइसोमेरिज्म एंड उन्हीं की रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन. बट नाउ कम्स अ वेरी सेपरेट एंटिटी जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको मिलेगा रेजोनेंस, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. जो ESR है, इसको हम केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं, सो वी बेसिकली कॉल इट ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, तो ये आपका अलग में एक टॉपिक बन जाता है. सो एज यू द क्वेश्चन की कार्बन एंड कंपाउंड्स पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तब बाकी टॉपिक्स को फिर भी एक एक वन 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 यू कैन गिव 1 point each to each topic. Biomatic compounds, I would suggest you कि give it at least a +3 or a +5 weightage. Okay, right. And regarding some of the named reactions, या फिर if you say important organic reactions, so we'll be getting the aldol condensation, then the Cannizzaro reaction. Okay. Other than that, we have the Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction जो थी वो हमने we looked at it just right now. Okay, so ये जो हमारी Friedel-Crafts reaction थी, that was basically to include an acyl group into one of the alkenes. And we उसका हमने पूरा mechanism अभी just देखा. Okay. Then after these reactions we have the alcohols, phenols and ethers. ठीक है, alcohol की बात करी हमने, phenol की, and then ethers also. Now what we are basically doing is कि हम जो पूरा functional group है, उस पूरे functional group को हम एक एक करके डिटैच कर रहे हैं या फिर उसको हम डिराइव कर रहे हैं. Then comes the carboxylic acids and their derivatives, whatever the reactions are present in that. Then will come the amines and their reactions. Okay, so we started with the straight chain compounds, then unka reactions, nomenclature. Then we came on to the aromatic compounds. After that, aldol condensation, Cannizaro's reaction, Friedel-Crafts reactions, and so on. Then alcohols, phenols, and ethers. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन उसके बाद अमीन्स.
ये order of reference में if you try to do it, then it will be very helpful for you. It is, I mean, the first time in this 5 to 6 sessions, someone has given a question in which it is a detailed question. Like the question is given, the options are given, even the answer is given. The only thing that is asked is explain why. And it is a JEE Advanced 2014 question. Okay. So the question says, assuming 2s 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is. ओके, तो हमें ये कह दिया गया है कि चलो भाई 2s 2p वाली मिक्सिंग इधर नहीं हो रही है. ओके, सो 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट देयर. टेल अस कि जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है इनमें से ये चार ऑप्शन में कौन कौन सी हो जाएगी. इट इज अ जेई क्वेश्चन. ओके, and also you have to explain ki why it is like that. So now, molecular orbital theory, as we speak, that can be used to explain the magnetic properties of molecules. For the given species, now which are the species that are given the options? I'll write it down on the left hand side. Okay, one is beryllium, then B2, then C2, Okay, so we'll take this 10th question again. Assuming 2s 2p mixing is not operative, we have to tell कि जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है इनमें से जो चार ऑप्शंस है उनमें से which one is the paramagnetic species involved. Okay, and the options that we have here is beryllium, boron, carbon and nitrogen. Now, having said that, ये जो compounds हैं ये इनके natural states में नहीं है. These are Be2, then boron 2 atoms, carbon के 2 atoms and nitrogen के 2 atoms. ठीक है? And this question of JEE Advanced 2014. And also we have to explain why. Okay? चलिए, so to answer this question, we'll take the help of the molecular orbital theory. Molecular orbital theory is basically used to explain the magnetic properties of molecules. Okay? अब इन स्पीशीज की बात करते हैं, एक एक स्पीशीज को हम देखेंगे एंड उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखेंगे. सो टॉकिंग अबाउट बेरिलियम फर्स्ट. बेरिलियम में आपका आता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. ओके, सारे ही जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये आपके पेयर्ड होंगे. अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है सो देयर इज नो
unpaired electron. That means there is no chance for any paramagnetic character. Okay, ये बेरिलियम तो हमारा रूल आउट हो गया. टॉकिंग अबाउट बोरॉन. बोरॉन में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. देन जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है, हैव अ वेरी केयरफुल लुक एट दिस. pi 2px1 pi 2py1. ओके, नाउ ये जो हमारे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई ऑर्बिटल्स में, दिस विल मेक B2 अ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. ठीक है, पाई 2px में हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर एंड पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ वी नो दैट एवरी ऑर्बिटल हाउसेस एटलीस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स. इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो हेंस इट हैज अ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. Talking about N2 first, ठीक है, because already the answer is given here, but we'll talk about N2. फिर लास्ट में हम C2 देखेंगे and then we'll see कि वो इन दोनों से अलग कैसे, right? चल, N2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, that is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 then pi 2px2 pi 2py2 as well as sigma 2pz2. Look here very carefully. Here the sigma 2pz, उसमें भी आपके दो ऑर्बिटल्स है, तो सभी ऑर्बिटल्स में यू कैन सी बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग एज वेल एज पाई वाले जो हैं, इन दोस टू टू इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट, मतलब कि सभी ये बॉन्डेड है, राइट. एंड hence it will be a diamagnetic substance. Okay, because all the electrons are paired. Let's talk about the C2. अब आप इसमें C2 दिया हुआ है, but look very carefully. C2 means 2s are 12. Okay, so we'll have to fill 12 electrons. सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में टू इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में टू इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px में टू इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py में फिर से इलेक्ट्रॉन्स. ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these are paired. Hence C2 is a diamagnetic substance. Okay. So what we saw here is हमारे पास तीन species है जो कि diamagnetic है and one of them is paramagnetic. Okay. In this case, B2 is a paramagnetic species. So the ideal answer for this one should be B2. Okay. The answer which is given here, that is wrong, and answer 2 should be B2. Okay. चलिए, moving on to the next question. The next question says, what is meant by solutions? And after this, two or three questions in line are the similar as such. Okay. One is solution. Second is how to calculate the molality of a solution. So solution is basically homogeneous mixture which is composed of two or more substances. There are basically keywords that you have to identify in each definition. I will highlight them for you. सो एक होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं. अब एक सोल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका सल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट. ओके, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट. तो जो भी सब्सटेंस आपका लार्जर अमाउंट में है, दो या दो से ज्यादा चीजों में, दैट substance which is in larger amount, that is known as a solvent. The other substances जो कि उसके अंदर साथ में प्रेजेंट है मिक्सचर में, those will be called as solutes. ठीक है. एंड जो सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया गया है, दूसरे शब्द में, एक तो हमने क्वांटिटी के बेसिस पे कह दिया,
दूसरे आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, दैट विल बी नोन एज द सोल्यूट। ओके, चलिए। अब सॉल्यूशंस जो हैं, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट कि सॉल्यूशंस कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस। ऐसा नहीं है कि मैं डिसॉल्व करने की बात करें तो एक सॉलिड लिक्विड में ही आपका सोल्यूशन रहेगा। इट कैन बी बिटवीन गैसियस फेज, ओके, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस ऑल्सो। you'll be surprised to know but those can also be solutions। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी फॉर्म में आपके कोई भी फेज में सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, coming on to the 12th question। 12th is basically just a formula कि how to calculate molality of a solution। आपको बस डिफरेंशिएट करना है इसको मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन से। एक में R है, एक में L है। ओके, या सो वन हैज एन R एंड वन हैज एन L इन इट। तो L इज बेसिकली, आपको याद रखना है कि स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे विच इज गिवन हियर। एंड इसमें हम बेसिकली सिर्फ मास से कंसर्न है। ओके, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द solute in the solution or the amount in liters, we are basically concerned with mass only। So molality is defined as number of moles of solute per kilogram of the solvent। Okay, and how do we calculate it? m is equals to moles of solute divided by mass of the solvent in kg। मतलब सिंपल फॉर्मूला आपका इसका ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ओके, इसके लिए स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं हम? द बेसिक स्टेप्स विच आर फॉलोड आर determine the number of moles of solute using the formula n is equals to mass upon molar mass। तो इससे हमें मोल्स मिल गए। दूसरा, हमने जो सॉल्वेंट है उसका मास किलोग्राम्स में मेजर कर लिया खुद से, तो इससे मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब क्या करना है? यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट। सो यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स बाय द मास ऑफ द, एंड नंबर ऑफ मोल्स किसके? सल्यूट के, एंड मास किसका? सॉल्वेंट का, इन केजी। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग मोलैरिटी। Let's talk about the mole fraction। The next doubt is regarding the mole fraction। Now, mole fraction is nothing but just a way of expressing, okay, एक मिक्सचर है, उसमें आपके जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी। सो मोल फ्रैक्शन बेसिकली टेल अबाउट दैट। ओके, इट इज डिफाइंड as the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of all components in the mixture। right, means एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उसके कितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, दैट इज योर मोल्स का फ्रैक्शन। नाउ इसको डिनोट हम करते हैं बिग एक्स। ड्रॉ, एक्चुअली यू ड्रॉ इट लाइक दिस, whenever you write it in the exams, you'll write it in this way, but here as a notation you can see xa or xb। if you're talking about the a component या फिर आप बात करते हैं b नाउ एज ये जो हमारा रेशियो है, ये जो फ्रैक्शन है, इट इज बिटवीन द सेम क्वांटिटी। सो जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, एंड सम अप टू द वन फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। देखिए अगर पार्ट से 7/10।
Okay, so we were in the mole fraction section. तो mole fraction का हमने definition देखा था. Let us talk about the ratio. So the mole fraction is represented by x. And अगर हम कोई एक particular compound की बात करें, let us talk about a compound A. So for the compound A, it will be moles of compound A divided by total moles of all components. जितने भी उस मिक्सचर में components present हैं, उन सभी के moles का it will be a sum. Okay, चलिए. Next, the next statement which we were seeing is the mole fractions are dimensionless quantities, and these will sum up to 1 for all the components of the mixture. The example for this is, suppose आप 3 parts निकाल देते हैं 10 में से, and in second attempt you take 7 parts out of 10. तो 3/10 plus 7/10 कितना हो जाएगा? 10/10, that is 1. तो यही कह रहा है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अगर आप मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो इट विल बी 1. ओके, so next let us talk about the Berry's pseudo reaction. The question is, what is Berry's pseudo reaction? Now, Berry's pseudo reaction या फिर rotation is a mechanism which is observed in certain 5 coordinate complexes. ठीक है, किसमें दिखता है हमें? 5 coordinate complexes में. जैसे कि आपका इसमें एक ज्योमेट्री आ जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. So trigonal bipyramidal molecules. It will also describe the rapid interconversion between different geometrical structures without the breaking of bonds. Okay, जैसे आपका ये एक pyramidal geometrical structure है, ऐसे ही आपका दूसरा जो 5 coordinate complex होगा, उनके बीच में there will be rapid interconversion and there will be no breaking of bonds as such present in between them. In this process, the equatorial ligands will become axial, and जो axial हमारे ligands हैं वो equatorial बन जाएंगे. This all leads to a dynamic equilibrium. Axial वाले equatorial बन जा रहे हैं, equatorial वाले axial बन जा रहे हैं. So there is a dynamic equilibrium present between them. यही जो pseudo rotation होगा, this will help us in explaining the fluxional behavior of molecules where apparent symmetry changes are observed. मतलब flux क्या होता है? Flux is basically a flow through a particular area or flow through a particular region. So ये जो molecules का flowing जो dynamic nature है, that will be very evident regarding the जो symmetry में changes होते हैं in these compounds. So that is the Berry's pseudo rotation. Now coming on to next question, which is the 15th. इसमें हम बात करेंगे दो compounds, दो एलिमेंट्स हैं, दो कंपाउंड्स हैं, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड. इनमें ही हम बात करने वाले हैं जो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो हमारा बॉन्ड है. ओके, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टू बॉन्ड्स. बेसिक डाउट इज कि इन दोनों में से मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ. ये दोनों ही जो हमारे बॉन्ड्स हैं, दोनों ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर फ्रॉम दी same group. So the silicon oxide bond is generally stronger than the carbon oxide. Why? रीजन है इसका कि अगर आप सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड देखें, सो इन दैट देयर विल बी द ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी एंड द एडिशनल डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन सिलिकॉन. अब एक तो ठीक है, आपने बॉन्ड एनर्जी की बात करी, दूसरा मेन जो point है that is the additional d orbital participation in case of silicon. Now this will allow for a partial d pi p pi overlap. ध्यान से देखना है पॉइंट को. सिलिकॉन में आपको d pi p pi overlap मिलेगा ऑर्बिटल्स में. Hence as a result the silicon oxygen के बीच में जो है, they will be typically found in stable structures. Which are the kind of stable structures we are talking about? Silicates, silicones, and
This will contribute to their robust nature. तो कार्बन में आपको सिर्फ p pi orbitals ज्यादा मिल सकते हैं, but in the case of silicon you can even get the d pi orbitals, right? Okay. Now 16th question, elaborate the first and second ionization potentials of copper and zinc. Okay, so regarding the first ionization potential of copper, तो पहले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कॉपर एटम से आपको निकालना है to form copper 1 plus. That will be the first ionization potential. कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आर्गन 3d10 4s1, राइट? तो पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल रिलेटिवली लो होती है। क्यों? क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालना टू फॉर्म अ स्टेबल 3d10 सबशेल, दैट इज रिलेटिवली इजियर। एंड जो हमारा कंपाउंड बन रहा है आर्गन 3d10, दैट विल बी अ स्टेबल सबशेल। जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है to form copper plus 2, that is very difficult. Why is it difficult and why is it significantly higher? Because stable 3d10 एक noble gas configuration से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे रिएक्शन में लाना है, that will be very difficult because उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पुल रहेगा, उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, and these will further resist the ionization, right? ओके, तो ये थी बात कॉपर की। लेट्स टॉक अबाउट जिंक। जिंक में द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लिक एटम टू फॉर्म Zn प्लस इज द फर्स्ट IP। जिंक में filled 3d10 and 4s2 configuration होता है, and hence removing one 4s2 electron does not disrupt the d subshell. Okay, moving on to second ionization potential. जो हमारा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है फ्रॉम Zn प्लस टू फॉर्म Zn प्लस 2, so similar to copper, second will be higher. क्यों? Because there is an increased nuclear charge on Zn plus as well as decreased shielding effect, but ये कॉपर जितना हाई नहीं होगा ड्यू टू द fully filled d subshell, right? So second ionization potential will show same pattern in copper as well as zinc. जो की डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दैट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर का सेकंड आईपी सिग्निफिकेंटली हायर क्यों है? क्योंकि स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक का जो फिल्ड डी सबशेल है वो दोनों ही आयनाइजेशन से अनअफेक्टेड होता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी with lattice enthalpy in alkaline earth metals. So lattice enthalpy हमारी basically होती है energy required to separate 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous ions. Hydration enthalpy क्या होती है? Energy released when 1 mole of gaseous ions is dissolved in water to form a solution. Alkaline earth metals में hydration enthalpy decrease down the group as the ionic size increases. जितने छोटे हमारे आयंस हैं उतनी ज्यादा उन पे चार्ज डेंसिटी होती है, लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो इन जनरल अगर आप देखें दोनों ही लैटिस एज वेल एज हाइड्रेशन एंथैल्पीज दे विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बट लैटिस एंथैल्पी विल डिक्रीज मोर स्लोली कंपेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी वजह से हमारे वेरिएशंस होते हैं इन solubility and stability of the compounds of alkaline earth metals.